I welcome you all in the next video tutorial of remedial biology theory, that is BP106 RBT. So in this video we are going to cover, yes, again unit number 1 we have covered the 5 kingdom of classification. Now in this video tutorial we are going to cover again a simple topic, binomial nomenclature. Okay, binomial nomenclature. So as the name indicates, the word nomenclature is derived from the two Latin words, that is nomen, which means name, and clear means to call. So it means to call by the name, and it is defined as the system which is responsible for giving name to a particular organism, say any plant or animal. We call them by names. So who gave this system of binomial nomenclature? It was proposed by Carl Linnaeus, and he gave this system, he proposed this system in 1758. In this system, organisms are named and their name consists of two parts. Suppose if I say Dhanpreet Kaur, so it consists of two parts. Dhanpreet is the name and Kaur also represent something. Okay, if I say Kartik Kumar, so Kartik and Kumar, it becomes the binomial system of the nomenclature, say for example, and it same applies to the animals or the plant kingdom. And this system of the nomenclature is the most accepted one. There are other systems also like binomial, in the same way trinomial classification system is there, single classification system is there, but this is the most precise and most acceptable one. So what is this system? In this system, organisms are named and they consist of two parts. So what are these two parts? The first part indicate the genus and the second species from which organism belong. Suppose if we want to write the name of the garlic, lasun, it has a botanical name as per binomial nomenclature is the Allium sativum. So in this way we can write different. So if we talk about some of the general rules of the binomial nomenclature, so you can see each binomial name of an organism consists of two Latin words. First one indicates the genus, the second indicates species. And always remember one thing, the generic name will be start with a capital word. Here example of human being is taken. So we the humans are scientifically known as the Homo sapiens. So the word Homo and sapiens, they represent differently. Homo means, yes, the genus. Okay, Homo means the first name is the genus and the sapiens is the species. And always remember the first word of the complete homo means it should be capital, and the name of the species, that is the sapiens, is first word should always be smalls. Homo sapiens is the name of humans. So there are essential requisites of the binomial nomenclature. That means the scientific name should be unique and individual. It must be the only name within that nomenclature. So suppose if you talk about a plant, suppose Allium sativum की बात करें तो गार्लिक के नाम से एक ही प्लांट होगा, that is Allium sativum. उसकी अलग अलग स्पीशीज हो सकती हैं, वैरायटीज हो सकती हैं, they have different names. So एक प्लांट मीन्स एक नाम. Okay, whereas ये आप पे अप्लाई नहीं करता. सपोज कार्तिक की बात करें या धनप्रीत कौर की बात करें तो धनप्रीत कौर के नाम से और इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ binomial nomenclature of this system of classification, we have one plant means one name. Means Allium sativum के नाम से कोई और प्लांट नहीं हो सकता. Allium sativum means garlic and it has its own uniqueness. Second, the universality. So universally the scientific name should be universal and acceptable throughout the world and biological sciences. So it should be universal, accepted throughout the world. से फॉर एग्जाम्पल एलियम सेटिवम, इंडिया में भी हम उसको गार्लिक ही बोलेंगे और उसको यूएसए में भी या चाइना में या किसी और कंट्री में भी उसको हम उसी, हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज में उसका नाम कुछ और हो. मैंडेरियन, सपोज चाइना में मैंडेरियन लैंग्वेज में उसका नाम कुछ और
रख दें, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो एलियम सेटिवम ही निकलेगा। ओके, तो द साइंटिफिक नेम शुड बी यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल्स होने चाहिए सारे की सभी साइंटिफिक नेम। सपोज कोई रिसर्च हुई यूएसए में एलियम सेटिवम के ऊपर, तो उस रिसर्च का टाइटल में जो वो प्लांट यूज करेंगे वो एलियम सेटिवम अगर यूज कर रहे हैं, दैट मीन इट इज अ गार्लिक। एंड सेम रिसर्च सपोज इंडिया में हो रही है सेम प्लांट पे, तो इंडिया वाले भी उसी प्लांट पे प्लांट का नाम सेम रखेंगे, क्योंकि दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दैट इज यूनिकनेस। देन स्टेबिलिटी, द साइंटिफिक नेम शुड बी स्टेबल एंड ऑथेंटिक एंड कैनॉट बी चेंजेबल। तो ऑथेंटिक नेम कैनॉट बी चेंजेबल, उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। So these three properties are very much essential for binomial nomenclature. It should be unique, it should be universally accepted, and it should have a stability. So one more thing you must know is about the plant taxonomy that I want to show you here. So what is this plant taxonomy? So it is a science that finds, identifies, describes, classifies and names plant. It is basically the method of nomenclature. Okay, how we will nomenclature, how we will put plant in a particular type of category, that is deals with this plant taxonomy. So what happen in the case of plant classification, scientific classification, it follows a system of rules that particularly classified as per groups. So plant has a particular kingdom, division, class, order, family, genus, species, variety, etc., etc. So we must consider these points also while classifying a particular plant. That which kingdom is belong, then it has a lower group of division, which division it belongs, then again which class it belongs, which order it belongs, which family, which genus, subfamily or subspecies, species or variety are there. So I think this is clear to you. Binomial nomenclature. Always remember one thing. Carl Linnaeus, 1758. Binomial means two. So we have to use two names. First is the genus. Second one is the species. The first letter capital of the genus, first letter small of the species, and it should be italic or underlined. Okay, the binomial name should be italic, either italic or you can underline it also. That means Homo sapiens is the name of the humans. So if we see some of the common scientific names of fruits and vegetables, तो साइंटिफिक नेम ऑफ सम ऑफ द वेजिटेबल, जैसे अनियन की बात करें, प्याज की बात करें तो एलियम सिपा। अभी हमने गार्लिक देखा, एलियम सेटिवम। अगर आम की बात करें फ्रूट्स की में, तो मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा इज अ जीनस, इंडिका इज अ स्पीशीज, एंड ओवर हियर इट इज नॉट अंडरलाइंड और इटैलिक्स। तो बट यू ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर राइटिंग you must either writes in italics because it is difficult to write in italic. हम italics में नहीं लिख सकते, इसलिए आपको जब भी ये साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं आपको अंडरलाइन करना है अलग अलग। जैसे सपोज अगर मैं इसकी बात करूं तो एलियम को आपको अलग से अंडरलाइन करना है और स्पीशीज को अलग से। जीनस, स्पीशीज, एलियम इज अ जीनस, सेटाइवम इज अ स्पीशीज। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इटैलिक्स करके। ओके, either write in italics or you can underline separately. Okay, next is the, अगर खीरे की बात करें, कुकुम्बर जो हम कॉमन वेजिटेबल यूज करते हैं, कुकुमिस सेटिवस। उसी तरह से टमाटर, टोमेटो, लाइकोस्पर्मम एस्कुलेंटम। अगर बनाना की बात करें, मूसा पैराडिस्कम। अगर गुआवा की बात करें, साइडियम गुआवा। इन द सेम वे अगर हम अपने पल्सिस की बात करें, जैसे अगर राइस की बात करें, ओरिजे सेटिवा, तो ओरिजे इज द जीनस नेम, सेटिवा इज द स्पीशीज नेम। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर जिंजर की बात करें तो अगेन जिंजिबर ऑफिसिनेलिस। अगर हम टोबैको की बात करें, निकोटियाना टोबैकम, तो निकोटियाना इज द जीनस, फर्स्ट लेटर कैपिटल, टोबैकम फर्स्ट लेटर स्मॉल ऑफ द स्पीशीज। So I hope this will give you a brief idea. In the last, I acknowledge all the sources that I have used. So we have completed this topic also, that is a binomial nomenclature. So thank you very much for your time.